अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अज़्ज़ वजल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैर हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरफ़ूअन लैसा बिमुअ्मिनिन मरफ़ूइन लैसा बिमुअ्मिन मन ला यअमनु जवारहु मौत इलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इग़फिर लिकाफ़तिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अल्लाहुम्मा या शाफियल अमराद अल्लाहुम्मा या हलालल मुश्किलात आमीन या रब्बल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे हम्द सना तारीफ व तमहीद उस बाबरकत ज़ात के लिए जिस बाबरकत ज़ात ने हमें लातेदाद बेशुमार नियामतों से नवाजा है, जिनमें सबसे बड़ी नियामत हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। बहरहाल जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू कर रहा था उसका उन्वान कुछ यूँ था कि इंसान जन्नत की कीमत क्या है, इंसान कैसे जन्नत को खरीद सकता है। उसमें सारे जितने भी आमाल सालिया है वो आते हैं, नमाज है, ईमान है, तौहीद है, ज़कात है, यानी जितने भी आमाल नेक है, मामलात है, इबादत है, जितने भी मरने से जीने से लेके मरने तक जितने भी जिंदगी गुजारने के तरीके इस जुमरे में, इस कैटेगरी में सब आते हैं। इंशाल्लाह एक एक करके बयान करेंगे। मैं नहीं, दूसरा जो हमारे दो हजरात और जुमा पढ़ाते हैं वो भी बयान कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी जुमरे में वो भी बयान करेंगे कि जन्नत की कीमत क्या है। कोई नमाज के बारे में कहे, कोई तौहीद के बारे में कहे। इसी इंशाल्लाह इसी मौजू को हम आगे लेते जाएंगे। आज जो मैं पहले गुफ्तगू छेड़ूंगा वो कुछ तफसीली गुफ्तगू थी, यानी तारुफ था
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा क्यों किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहते क्या है और जन्नत मिलेगी कैसे, इंसान की बुनियाद, ईमान की बुनियाद कहाँ से शुरू होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को बनाया है, सिर्फ इसलिए बनाया है, या बार बार सुनते आ रहे हैं, जानते हैं, मानते हैं इस बात को, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत एक मखसूस चीज के लिए इस दुनिया में भेजा है, खासकर इंसान और जिन को। बाकी जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक़ात है, उन पे ये अमल, ये तरीका, ये अल्लाह का कानून नाफिज नहीं होता है। ज़ाब्ता कौम एक तो जिन है, एक तो इंसान है और फिर जिन है, बाकियों पे ये जो इबादात है, मामलात है, अल्लाह के एहकाम है, ये उन पे लागू नहीं होते। इंसानी जिंदगी की हकीकत क्या है? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को भेजा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का सिलसिला शुरू किया ताकि कनेक्शन जुड़ा रहे। सबसे पहला नबी, सबसे पहला इंसान, so when Allah subhanahu wa ta'ala created Adam ala nabina alayhi salatu wa salam, and then his offspring is going on, then his species going on, Allah subhanahu wa ta'ala wants, Allah subhanahu wa ta'ala, the desire of Allah subhanahu wa ta'ala is that his creation, referring to mankind, he does not want to detach them from the faith of Allah subhanahu wa ta'ala, from his faith. So Allah subhanahu wa ta'ala started a process by which he connect his mankind. That process is called as the prophethood. Allah subhanahu wa ta'ala starts sending prophets in this universe. The work of prophet is to give the message, of Allah subhanahu wa ta'ala to the people, to the mankind. The ways, the rules, the principles, the regulations of Allah subhanahu wa ta'ala, which will join the mankind to Allah subhanahu wa ta'ala. पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा क्यों किया? What's the exact meaning of existence of human life? What is the exact meaning of existence of mankind? The reality of existence of mankind, what it is? Why Allah subhanahu wa ta'ala created us? Why Allah subhanahu wa ta'ala gave us existence? Nothing is meaningless. Even Allah subhanahu wa ta'ala does not need our ibadah. तो बेनियाज है. As I show you, the life of a mankind is like a candle. If you put a candle in open air, definitely when you start its processing, it will give out the flame and it will enlighten the whole room where it's present. You know, its existence, its origin will vanish or will finish after some time. So its existence lasts for a few seconds. It does its work and vanishes. So its existence is not everlasting. Its existence lasts for a few seconds, for a few minutes. After that it will be vanishing. Its existence will be ended. Its existence will be destroyed. Similar cases with us. Allah subhanahu wa ta'ala created us, and we are not supposed to live in this world forever.
after few years, after 50 years, after 60 years, after 20 years, after 10 years, whatever Allah subhanahu wa ta'ala knows, we have to leave this world. Our existence will be vanished in this world. What will be left? Only one thing. That's our good deeds, the righteous deeds. So, the main aim of mankind must be worship of Allah subhanahu wa ta'ala, because kullu man alayha fan, this world also will be destroyed. There will be a tragic end of this world. Especially you can say when a man dies, his world ends. There occurs end for him or her. When he dies, his world ends. Now he will get the result in the grave hereafter, what he or she lost or what he or she gained in this world. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, Isha ma shi'tu fa innaka mayyatun. How much you want to live in this world? Death is always end. You have to face the death. There is no shortcut. It's the Sahih Hadith. وَأَحْبِبْ مِنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارَ. You love whom you want, one day you will get detached from that. जिससे प्यार करते हो एक दिन उससे अलग होना ही है. दुनिया से प्यार कर रहे हो, दुनिया से अलग होना है. पैसे से प्यार कर रहे हो, अलग होना है. किसी चीज से प्यार कर रहे हो, one day you have to leave that thing. तो बचता क्या है? इबादत. इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन अला अव आबिर सभी. कुन फी दुनिया का कअन्न गरीबुन अव आबिर सभी. That a man must live in this world like a traveler. I will give a best example to understand this, to explain this. That man should live this life, the life in this world, like a guest in a house. When you are going to someone's house as a guest, before going there, before coming to someone's home as a guest, before entering their home, we already had made a mindset that we had to leave this house after a few days, after a few hours, whatever we there. So we are guests here. We do not make our impression bad. We tried a lot. We always think how to do their best. During stay in their house, we always think about how to do the best. Because after exit, I must be respected and honored. That is the reality of this world. You should live here like a guest. We are the guests of this world. So what we get, the honor, the dignity from here, will be the result in hereafter. Will be the result in grave. इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल फी दुनिया का अन्नका गरीबुन अव आबिरुस सबील. दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह एक मुसाफिर, राह चलता मुसाफिर रहता है. समझ में आ रहा है आपको बात? क्योंकि अल्लाह ताला इस बात को बयान फरमा रहे, मैंने इससे भी पहले कहा, अल्लाह ताला फरमाया दुनिया उदारुल महीन, कि ये जो दुनिया इम्तिहान गाह है, this world is examination hall, so you have to face different questions, different problems, different hardships. There is no cheating. क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला
सूरह बलद में कह रहे हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मशक्कत के लिए पैदा किया. We have created man into hardship. We can say we have created, Allah subhanahu wa ta'ala says, I have created the man to face the hardships. So, the life of Muslim never becomes smooth in this world. As Allah subhanahu wa ta'ala recommended, Allah subhanahu wa ta'ala said, I will explain this. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. We have created man into hardship, or we have created man to face the hardships. What will be the result? If a man accepts these hardships, then face these hardships with full faith, these hardships, these sufferings will ease his way during the day of judgment. Because during the day of judgment is the day of result. We will get a mark sheet. Duniya darul maheen. Dunya imtihan ghar hai. We will get a mark sheet. Then we can find how much score I have made in this world. So, my dear brothers, the companions of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam showed us this thing practically. First, how and why the life of this world is full of hardships, and how to face these hardships, how to deal with these hardships, how to deal with these sufferings, how to deal with these troubles. Why a Muslim needs struggle much more in this world. Why a Muslim is not made for this world. They showed us practically. And what will the reward? What's the reward of that acceptance? What Sahaba did? Everybody knows. Radiyallahu ta'ala anhu. They loved Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala loved them back. Because every Muslim will be tried in this world. So if you pass in that trial, you are the successful one. You achieve the goal for which purpose Allah subhanahu wa ta'ala has created you. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا. Do the people think that they will be left? लोग सोच रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा. أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. They say, do the people think that they will be left and say, they believe, they are believers and they will not be tried. Here Allah subhanahu wa ta'ala wants us to say that I will put a believer in troubles, in hardships, if he or she struggles, and be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and never deviate the path of shaitan, and never deviate the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But these hardships, these struggles, these troubles in the life makes the path of shaitan very narrow, more narrow for him. And he will be successful in this world also hereafter, in here and hereafter. Because hardships, sufferings are for Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala wants to know, will he obey me during the hardships of life, or he forget me? Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
Allah Tabarak wa Ta'ala says, we have tried those before them. हमने आपसे जो पहले थे उनकी भी आजमाइश की, उन्हें देखा, उन्हें आजमाया. Allah subhanahu wa ta'ala will surely make evident those who are truthful, and He will surely make evident for those who are liars. Allah subhanahu wa ta'ala will categorize those who are truthful separately and will categorize those who are liars. Is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the issue becomes, who is on truth, who follows the lie? The answer is that we are tried every day. Allah subhanahu wa ta'ala tries every day. If we do bad deeds in this world, in our daily routine, then we are proving ourselves that we are liars. Because we already commented, we already promised Allah subhanahu wa ta'ala after Allah subhanahu wa ta'ala will send us in this world, we will obey Allah subhanahu wa ta'ala, and here we are not obeying Allah subhanahu wa ta'ala. Let man think himself that he is a liar. And if you are doing the good deeds, that he thinks I am following the truth. That's all. And during the day of judgment, it will be the last result. It will be the conclusion. What you get, it will be the add up of these days. What you did, what you not did. Everybody knows his deeds. So he can collect all the information about himself or herself, that am I a liar or am I following the truth. और Allah subhanahu wa ta'ala आगे फरमाए, अन हसिबल लज़ीना यअमलून अस्सय्याति अन यस्बिकूना साअ मा यहकुमून. Those who do evil deeds, do not follow Allah subhanahu wa ta'ala, think that they can overturn us. Evil is what they judge. वो क्या समझते हैं कि वो बुराया कर रहे हैं, कि वो अल्लाह के काबू से बाहर है, और वो ऐसी तजवीज़ कर रहे, they are planning that we are overturning Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody will ask us. Not only the common man will be tried, but also prophets, we are tried by Allah subhanahu wa ta'ala. So the basic concept here is, when you are under trial, when Allah subhanahu wa ta'ala tried you, जब Allah तबारक व तआला आपको आज़मा